नमस्कार. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वार्ताहर परिषदेमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. गेले 10 दिवस दिल्लीच्या जंतर मंतरवर महिला कुस्तीपटू या आंदोलनासाठी बसलेले आहेत आणि काल मध्यरात्री त्या ठिकाणी पोलिसांनी भर पावसामध्ये कुठेतरी लाठीचार्ज केला, कुठेतरी धक्काबुक केली, कुठेतरी शिवीगाळ केली आणि आंदोलन हे जे आपलं अधिकार आहे त्या आंदोलनात त्यांचा मोडण्याचा हा प्रयत्न झाला. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांचं सरकार आहे आणि महिलांचे सन्मान आणि सुरक्षा घेऊन आम्ही सरकार चालू असा 2014 मध्ये त्यांनी वायदा केला होता. परंतु आता पोलिसी बळावर अन्याय झालेल्या महिला क्रीडापटू यांचं आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रकार काल दिल्लीमध्ये झाला त्या गोष्टीचा तीव्र निषेध राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी करत आहे. या महिला भगिनींना सन्मान मिळावा, त्यांच्या प्रश्नाला वाचा फुटावी आणि यथोचित कारवाई त्यांच्या मागण्यांवर व्हावी अशी देखील भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आहे. गेल्या 2 तारखेला पवार साहेबांनी राजीनामा दिल्यानंतर बरेच वृत्तसंस्थांनी वेगवेगळे अग्रलेख लिहिले. एका वृत्तसंस्थेने सर्वे केला की आता महाविकास आघाडीचं काय होणार. मी आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी एकत्रितपणे, एक दिलाने, एक विचाराने, ताकदीने उभे राहणार आणि महाराष्ट्रामधनं भारतीय जनता पार्टीला हद्दपार करणार. आपण काल बाजार समितीचा निकाल पाहिला असेल, त्याच्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निकाल पाहिला असेल, त्याच्या आधी आमदार विधान परिषदेचा निकाल पाहिला असेल आणि सर्वीकडे साधारणपणे महाविकास आघाडीला विजय मिळत आहे. त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या ह्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीवर कुठला विपरीत परिणाम न होता उलट महाविकास आघाडी आणि देश पातळीवर भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात असलेले सर्व लहान मोठे पक्ष एकत्र करण्यामध्ये ताकदच मिळणार आहे. एक दुसरी अशी बातमी वाचली की सुप्रीम कोर्टाचा निकाल 16 आमदारांच्या अपात्रेबाबत येणार आहे असं अपेक्षित असताना केंद्रीय कायदा मंत्री सन्माननीय किरण रिजिजू साहेब यांनी महाराष्ट्राचे विधानसभेचे अध्यक्ष सन्माननीय राहुल नार्वेकर साहेबांची भेट घेतली. आता ही भेट बंद दरवाजाआड झाली. वेगवेगळ्या वृत्तसंस्थांनी वेगवेगळी भूमिका त्याच्यामध्ये मांडली. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय येईल हे मला माहिती नाही, परंतु काही वेगवेगळे तर्क मांडण्यात आले. जर अमुक प्रकारे निर्णय झाला तर काय होईल, जर वेगळा असा निर्णय झाला तर काय होईल आणि त्याच्यावर स्पीकरची भूमिका महत्त्वाची ठरेल आणि म्हणूनच ही भेट कुठल्या दबाव तंत्राच्या अंतर्गत आहे का असा संशय देखील काही अग्रलेखाच्या माध्यमातून मांडण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळे ह्या भेटीचा खुलासा, ह्या भेटीचं रहस्य आणि ह्या भेटीमध्ये नेमकं काय झालं हे जनतेच्या समोर येण्याची आवश्यकता आहे. काल बेळगावमध्ये प्रचार करत असताना एका पक्षाचे वरिष्ठ नेते असे म्हणाले की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही प्रमुख नेत्यांची देशाचे गृहमंत्री सन्माननीय अमित शाह यांच्यासोबत 3 वेळा बैठक झालेली आहे आणि कुठेतरी काँग्रेसच्या उमेदवारांचा पराभव व्हावा म्हणून कर्नाटकमध्ये राष्ट्रवादीने 40 उमेदवार उभे केले. मला अतिशय नम्रपणे सांगायचं आहे की या महान नेत्यांनी हे केलेलं वक्तव्य पूर्णपणे निराधार आहे, पूर्णपणे चुकीचं आहे आणि साधारणपणे दिशाभूल करणारं हे वक्तव्य आहे. पहिली गोष्ट तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कर्नाटकमध्ये 40 उमेदवार नाहीत, फक्त 9च उमेदवार आहेत. दुसरी गोष्ट, राष्ट्रवादीचे काही ज्येष्ठ नेते 3 वेळा भाजपला समर्थन देण्यासाठी अमित शाह साहेबांना भेटले असं IQ माहिती
या महोदयांनी सांगितली ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे, याला कुठला आधार नाही आणि राष्ट्रवादीची विचार हे सेक्युलर विचार आहेत, समतावादी विचार आहेत, समाजवादी विचारसरणीचे विचार आहेत. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीसोबत कुठल्याच प्रकारची तडजोड राष्ट्रवादीची नाही किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठकसुद्धा झालेली नाही. असे चुकीचे विधान होऊ नये अशीच या निमित्ताने मला विनंती करायची आहे. आपले काय प्रश्न असतील तर प्रश्न पवार साहेबांचा एक आवाका हा राष्ट्रीय स्तराचा आहे आणि म्हणून पवार साहेबांनी एकाएक असा निर्णय घेतल्यानंतर स्वाभाविक सगळ्यांना धक्का बसलाय. पवार साहेबांना मानणारा वर्ग महाराष्ट्राच्या पलीकडे पण आहेत आणि फक्त कार्यकर्त्यांमध्येच नव्हे तर देश पातळीवरचे अनेक नेते पवार साहेबांना मानतात आणि त्यामुळे साहेबांना भेटायला येणाऱ्याची गर्दी वाढत चालली आहे. कालपर्यंत कार्यकर्तेच येत होते, आता वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेते देखील याला सुरू झालेली आहेत. एक विषय मला अजून सांगायचा राहिला. एप्रिल महिन्याचा CMIचा डेटा आला. या डेटामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की 4 महिन्याचा उच्चांक बेरोजगारीने गाठलेला आहे. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्माण करू, ह्या देशामध्ये अच्छे दिन आणू असा वायदा सन्माननीय मोदी साहेबांनी केला होता. परंतु दिवसेदिवस जर आपण पाहिला तर त्या ठिकाणी बेरोजगारीचा आलेख हा वाढत चाललेला आहे. रोजगाराची संधी उपलब्ध नाही आणि सरकारी कनिष्ठ पदाच्या नेमणुकीवर देखील उच्च शिक्षित लोक येऊ लागलेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की बेरोजगारी आटोक्यात आणण्यामध्ये केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्णपणे फेल झालेलं आहे आणि ह्या देशातली बेरोजगारी मोदी साहेब दूर करू शकत नाही. त्याच्यामुळे 2024च्या निवडणुकीमध्ये भारतातला सुशिक्षित तरुण आणि बेरोजगार हा मोदी साहेबांच्या भूलथापांना बळी न पडता भारतीय जनता पार्टीला मतदान करणार नाही. सर हिंदीमध्ये फक्त कुस्तीपटूंच्या संदर्भात सामना के अंदर जो लिखा गया वो संपादक का व्यक्तिगत मत है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि पवार साहब एक यूनिफाइंग फैक्टर है पूरे MBA के लिए और ना ही MBA बल्कि UPA के लिए, और इसीलिए पूरा कैडर पवार साहब के साथ है, पूरा लेजिस्लेचर पवार साहब के साथ है और MBA को एक साथ लाने में पवार साहब का बहुत बड़ा हाथ है. ये भी उस आर्टिकल में लिखा गया. यानी आप महेश जी डिनाई नहीं कर रहे कि जो उन्होंने कहा है वो गलत है? देखिए, एक संपादक का मत है, संपादक अपनी राय लिखने में सक्षम है, लोगों ने पढ़ के उसके अंदर से अपना अनुमान खुद निकालना चाहिए. मुझे उसमें से जो 2 चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने आपके सामने बताई. लेकिन वो संपादक महाविकास आघाड़ी के हिस्सा है और विपरीत चीजें लिखी. देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि NCP में किसी भी प्रकार का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नहीं. ये पहली बात है. जितनी भी बातें NCP के विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में संपर्क में होने की बातें हैं, ये सारी मनगढ़ंत है. इसके ऊपर खुद पवार साहब ने खुलासा किया, अजीत दादा ने खुलासा किया, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब ने खुलासा किया और सभी स्तर के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहने की भूमिका स्वीकारी हुई है. इसीलिए ठीक है, आर्टिकल है, वर्तमान पेपर में छपना चाहिए, उन्होंने अपनी भूमिका रखी. पवार साहब MBA के लिए और देश में एंटी फैसिस्ट फोर्सेस के लिए एकमेव यूनिफाइंग फैक्टर है. अजीत पवार पर आरोप लगाए गए हैं और बार-बार संजय राउत की तरफ से संपादक कहकर बात को, सवाल को टाल रहे हैं.
वो शरद पवार साहब के बहुत करीबी हैं, एमबीए में बहुत मायने रखते हैं, सांसद भी हैं। सिर्फ संपादक कहकर आप उनकी लिखित बात को हल्का कर रहे हैं। विषय क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर उनको कुछ कहना होता तो एक में की सभा में कहते, राजनीतिक मंच पे कहते, लेकिन राजनीतिक मंच पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक संभावना है, और ये सिर्फ सामना पहला पेपर नहीं है जिसने ऐसा लिखा है, कि बहुत से पेपर में इस प्रकार का स्टेटमेंट, इस टाइप के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आ के चुके हैं। तो इसलिए सामना को अकेले को इस चीज़ के ऊपर मुझे लगता है नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत सारे पेपर्स ने लिखा, लेकिन हमने सारी चीज़ें डिनाई किए। There is no rift in the NCP. There is no question of any faction of the NCP aligning with the BJP at any cost. Any message you want to give to Uddhav Thackeray Shiv Sena? Any message that you want to? We are clearly with the MVA. We have stood by the Shiv Sena during the crisis moment. There is no crisis in the NCP, but our patriarch leader has put down his papers as national president, paving way for a younger, more vibrant leadership to take over. Although we, the Karyakartas of NCP, want our leader Pawar Sahab to continue for the next couple of years, but the final decision the committee will be taking. I understand there is a meeting of the committee in the next, I think by tomorrow there is a meeting. महेश जी, पृथ्वीराज चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया बेलगांव में, जिसमें साफ कहा है कि एनसीपी के नेताओं की बैठक बीजेपी के साथ हुई है और आने वाले समय में एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है। माजी मुख्यमंत्री सम्माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब का स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है, आधारहीन है, क्योंकि उनको किसी ने शायद मिसलीड करने की कोशिश की है। उन्होंने ना ही देखा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ मीडिया के लोगों के माध्यम से ये बात पता चली। अब मीडिया के लोगों से माध्यम से बात चली तो उसमें कितना सत्य है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूँगा कि पृथ्वीराज चौहान जी ने जो स्टेटमेंट दी वो पूरी तरह से गलत है। एनसीपी के किसी भी नेता का किसी भी प्रकार का मिलन या मीटिंग सम्माननीय गृह मंत्री जी के साथ नहीं हुई। एनसीपी के किसी भी प्रकार की बातचीत सरकार को बनाने के साथ, मुझे बीजेपी के साथ सरकार को बनाने के लिए नहीं है, और ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। सारी चीज़ें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सम्माननीय पवार साहब ने स्पष्ट की हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने स्पष्ट की हैं, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अजित दादा पवार साहब ने स्पष्ट की है। उसके बाद बाकी की कोई चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आपके सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं। लिखते हैं तो आप लोग इस बात की शिकायत उद्धव ठाकरे से क्यों नहीं करते? अजित पवार भी नाराजगी जता चुके हैं, आप कह रहे हो शरद पवार साहब इनकार कर चुके हैं, तो आप लोग संजय राउत को समझाते क्यों नहीं है? उद्धव ठाकरे से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? देखिए, वो एक संपादक की भूमिका में बोल रहे हैं। मुझे उनका 1 मई का बीकेसी का बयान अच्छे से याद है, जिनमें उन्होंने अजीत दादा के बारे में अच्छा ही बोला है। तो उसको सच्चा मानूं कि इसको सच्चा मानूं? मैं एक कार्यकर्ता हूं और पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूं, तो इसलिए बीकेसी में जो संजय राउत जी बोले वो सत्य है। आज जो उन्होंने लिखा वो एडिटोरियल है। एडिटोरियल में हर तरह का पेपर में पढ़ने वाला व्यक्ति रहता है, तो ठीक है, उनको एक एंगल देना था, उन्होंने एक एंगल दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि एनसीपी में किसी भी प्रकार का भाजपा को लेके दो मत नहीं है, एक ही मत है, वो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करना, महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मजबूती देना और 2024 की लोकसभा में महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की चुन के लेना। राहुल गांधी जी की सुप्रिया सुले जी से क्या बातचीत? ये मैं नहीं जानता क्या बातचीत हुई, लेकिन बहुत से नेताओं के फ़ोन अलग अलग स्तर पे आ रहे हैं। शायद पवार साहब को भी कुछ लोगों के फ़ोन आए, सुप्रिया जी को भी कुछ लोगों के फ़ोन आए, और पूरा मैं नहीं जानता क्योंकि मेरी सुप्रिया जी से बात नहीं हुई, वो एक मीटिंग में थी ऊपर। लेकिन बहुत से नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि पवार साहब ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। स्वाभाविक है, अगर हम पार्टी कैडर, हमें अगर ऐसा लगता है कि पवार साहब ने ऐसे डिसीजन की ली है, तो देश के अन्य नेताओं को भी शायद इसी प्रकार से लगता होगा। ये आपको कैसे मालूम? किसने कहा? मुझे नहीं पता। पवार फैमिली का शुभचिंतक पूरे देश में है,
कोण आहे तिथे जरा ते सांगा ना जरा 2 मिनिटं ते पिक्चर चालू आहे. ते कॅमेरावाल्यांना जरा 2 मिनिटं ते बोला ना, ते कॅमेरा गेले ते सगळे जाते तिथे. थांबले 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 2 मिनिटं थांबा ना जरा. कॅमेरावाला अजून काय प्रश्न आहे का? सर इसका जरा फिर से एक बार जवाब दिए इज द इक्वेशन टिल्टिंग टुवर्ड्स सुप्रिया सुले जी क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स NCP cadre is along with our leader Sharad Chandra Pawar sahab. We do not want him to resign from the post of national president. There is a meeting which is scheduled to be held tomorrow of the committee which has been again nominated by Pawar sahab himself. The committee will again deliberate on the issue. The committee is going to request Pawar sahab to take back his resignation, and the rest of the things will follow. Thank you.